Welcome to my YouTube channel. Dear viewers, I had some constraints and compulsion, so I could not upload my video on this Teachers' Day occasion, but better late than never. Happy Teachers' Day to all my friends who are teaching anywhere in this country or anywhere in the world, and all the students a very happy Teachers' Day to you all. Now, dear students, the person who declared his birth to be celebrated as Teachers' Day was Sarvapalli Dr. Radhakrishnan. So it is a sincere tribute to that great person who made the place of teacher immortal forever. And now we the teachers, all the teachers are indebted to him that he dedicated his birthday to be celebrated as Teachers' Day. So after in 1 year, we the teachers realize, the students realize, and everybody realize the place and person and performance of a teacher. Now, so far as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is concerned, you must remember that when our country got freedom in 1947, India was just a creeping child. And in the long subjugation of British Empire, right from 1757 and 1764 Plassey and Buxar's battle up to 1947, more or less 200 years. So in these 200 years, the fate of the nation and the fate of the people was not in a good condition. The condition of education was not so good. So he dedicated his birth to be celebrated as Teachers' Day to uplift education, to uplift readers, students, and uplift the moral and morale of the teachers forever. So we teachers are extremely indebted to this great person who declared his birthday to be celebrated as teacher. Now, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on Tirutani, then it was in Andhra Pradesh on 5th September 1888. He was the second child of Sarvapalli Veeraswamy. He was admitted to school at the age of 5, and after completing his secondary education in a very fantastic way, he got admission in FA. Then it was called as today's intermediate. After passing FA, he got admission in Madras Christian College, and later on in 1909 he completed his master's degree in philosophy. Now let us come to this point that when he became vice president of our country in May 1952, as you know that Dr. Rajendra Prasad was the first president of independent India, and Sarvapalli Radhakrishnan became the second president of the nation in May 1952. But when in 1962 he became the president of the nation. He got Bharat Ratna in 1954. When he became the president of our country, Dr. Zakir Hussain was the
president of nation. Later on, he also became the president of our country. When Dr. Radhakrishnan became the president of our country, the then great philosopher Bertrand Russell spoke of him. Philosopher should be the king, or the king should be a philosopher. Now, he said that it is an honor to philosophy that Dr. Radhakrishnan to be the president of India, and I as a philosopher take a special pleasure in this. He, as a tribute or as an admiration, he recognized Bertrand Russell, the then philosopher, about our great Sarvepalli Radhakrishnan. Dear students, dear viewers and dear colleagues, what is the place and personality and new challenges of today in Teachers' Day? I myself became teacher on 25th March 1981, and after that I have been teaching right up to +2 English as an English lecturer, and I have found myself that a teacher is a cosmopolitan being. His place is recognized as a universal being. He enjoys the privilege of universal citizenship, you may say. There are certain posts which are beyond all barriers, like the advocates, the doctors and the teachers. A teacher of today is respected, honored and revered, all because of the past gurus who were held in great esteem. And Indian philosophy, there are two very great quotations, rather three very great quotations. Whenever Teachers' Day comes, the students and other person express those quotations. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी टीचर का मुकाम इन तीनों लोगों से भी आला दर्जे पर है, जिसको फारसी में कहते हैं कि जौरे उस्ताद बहरे मेहरे पेदर। माँ बाप से भी आला मुकाम है टीचर्स का। माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन इंसान जो बनाता है तो उसको इंसानियत के सांचे में टीचर ही ढालता है। तो एक और कोटेशन जो टीचर्स के महानता को जाहिर करती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि भगवान की, ईश्वर की हैसियत को अगर कोई बताता है तो गुरु ही बताता है। अगर दोनों एक साथ एक जगह खड़े हो जाएं तो सबसे पहले हम गुरु का आदर सम्मान सत्कार करेंगे, ना कि भगवान का करेंगे, कि उनके मुकाम को इन्होंने ही बतलाया। और एक और बड़ी बात कही जाती है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। तो गुरु की यही महिमा है और उस्ताद का ये मुकाम है, टीचर्स की ये एक्टिविटी है और टीचर्स का ये काम है कि जिस तरह से कुम्हार किसी चीज़ को बर्तन बनाने के लिए अपने हाथ से संवार करके किसी को ढाल करके एक बेहतरीन चीज़ बना करके दुनिया में पेश करता है, उसी तरह माँ बाप जब स्कूल में 3 साल के एक बच्चे को लाते हैं, 5 साल के एक बच्चे को लाते हैं जो कुछ भी नहीं जानता है, वहाँ से ला करके उसको ढाल करके +2 तक लाए जाते हैं। तो प्लेस ऑफ टीचर इज़ ग्रेट।
and he is respected because of his place and personality. Now with the changing world of time, जो आज जो हमारे वक्त में जो हम लोग टीचर थे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी किताबों की स्टडी करनी पड़ती थी, नोट्स बनाने पड़ते थे, और फिर उन नोट्स को ले जा करके हम लोग याद करके या लिखवाया करते थे। आज के टीचर के सामने बहुत से चैलेंजेस भी हैं नए और बहुत सी आसानियां भी हैं। आप अपने मोबाइल से सारी चीज़ें निकाल सकते हैं और बच्चों को होमवर्क दे देते हैं कि ये चीज़ वहाँ से गूगल से निकाल के पढ़ लो। अभी के दौर में जो मैं देख रहा हूँ, अपने 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद अभी जो मैं देख रहा हूँ बच्चों की हालत, वो ये है कि मटेरियलिज़म डोमिनेट कर रहा है स्पिरिचुअलिज़म पर। अगर आप बीएड पढ़ेंगे तो उसमें जो 2 चैप्टर्स आते हैं, मटेरियलिज़म एंड स्पिरिचुअलिज़म। हिंदुस्तान की सरज़मीन आज इतने अच्छे ख़यालात, इतनी दुनिया में हमले हो रहे हैं तरह तरह से हमारे कल्चर पर, सिविलाइजेशन पर, हमारी चीज़ों पर, लेकिन उसमें बचने की वजह यही हो गई कि यहाँ स्पिरिचुअलिज़म डोमिनेट करता है मटेरियलिज़म पर। लेकिन धीरे धीरे मटेरियलिज़म इतना हावी हो रहा है कि टीचर भी मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और स्पिरिचुअलिज़म का डिमिनिश करता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअलिज़म इज़ diminishing gradually and materialistic approach is dominating। तो आप जब पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपके सामने सब्जेक्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सैलरी का ख्याल नहीं हो। टीचर्स अभी कई कैटेगरीज में बटे हुए हैं, मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवर्सिटीज़, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एडवर्स सिचुएशन, आपको अपने पर्सनालिटी को बना करके रखना है, प्लेस को बना करके रखना है, ताकि जब आप ब्लैक बोर्ड पर टीचर खड़ा होता है तो उसके सामने सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट होता है, सैलरी का ख्याल नहीं होता है। तो अभी मटेरियलिज़म को आप डोमिनेट नहीं करने दें। मैं शिक्षक बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ पीछे के एक्सरसाइज को सॉल्व कर देना, क्वेश्चन आंसर बतला देना, यही तक आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप बच्चों में पैट्रियोटिज़म डेवलप करें, नेशनलिज़म डेवलप करें, ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करें, मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करें। आप बताएं कि माँ बाप की हैसियत क्या है, बड़े का अदब क्या होता है, छोटे से प्यार कैसे किया जा सकता है। अपने मुल्क से मोहब्बत करें, लेकिन अपने ही मुल्क से सिर्फ मोहब्बत ना करें। इंसान से, इंसानियत से मोहब्बत, ये सारी चीज़ें, ये इस पर आप ज़्यादा अभी जोर दें, जिसकी बहुत कमी हो गई है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सब्जेक्ट पढ़ के तो आ जाते हैं, लेकिन वो लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं। लिटरेट होना और बात है, एजुकेटेड होना और बात है। तो लिटरेट नहीं हो, एजुकेट करें आप, उनमें मोरल आप डेवलप करें। आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स दैट यू स्ट्रेस अपॉन these kind of qualities, create among the students a fine person, a fine human being, a good human being that whose heart is filled with the milk of human kindness. Moral values should be developed. These are some of the experience I have shared with you. I hope you people will follow my request. Once again, I salute this great person who dedicated his birthday to be celebrated as Teachers' Day. Thank you so much indeed.